हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैट्रिक्स क्लासेस। आज हम देखेंगे लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सो सेशन शुरू करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हेमिस्फीयर। इक्वल डिवीजन ऑफ अर्थ इन टू पार्ट्स इज द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर डिवाइड्स अर्थ इन टू इक्वल पार्ट्स। See, hemisphere divides earth in two equal parts. This is northern hemisphere, this is northern hemisphere, and this is southern hemisphere. Likewise, this is western hemisphere and this is eastern hemisphere. So equator divides the globe. Equator divides the globe horizontally in two equal parts, northern hemisphere and southern hemisphere. This is equator. This is equator. This divides earth in two equal parts, that is southern hemisphere and this is northern hemisphere. Prime meridian or international date line. This is prime meridian international date. Prime meridian international date line divides the globe vertically in eastern and western hemisphere. See, this is northern hemisphere. This is northern hemisphere. This is southern hemisphere. This is eastern hemisphere and this is western hemisphere. आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या है? इमेजिनरी लाइन से जो ग्लोब पे ड्रॉ की है। सी, these are the lines of latitudes. These are horizontal lines. Latitudes are horizontal lines, and this is equator. Equator divides earth in two equal parts, and these are the vertical lines. These vertical lines are longitudes. These are and this is a prime meridian. So line of longitude, these are lines of longitude and these are lines of latitude. Latitude and longitudes are imaginary lines. Horizontal lines are latitudes. Vertical lines are longitudes. latitude क्या है? इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन से जो ग्लोब पे ड्रॉ की गई है ईस्ट टू वेस्ट. सो these are latitudes which are drawn east to west on globe. हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है latitude. एंगुलर डिस्टेंस इक्वेटर से एंगुलर डिस्टेंस पे होती है लैटिट्यूड. लैटिट्यूडनल लाइंस या लैटिट्यूड्स. 1 डिग्री लैटिट्यूड अप्रोक्सीमेट होता है 111 किलोमीटर्स. टोटल लैटिट्यूड्स कितनी है? 181 लैटिट्यूड से. डिस्टेंस बिटवीन ईच लैटिट्यूड इज सेम, which is approx 111 kilometers. So so latitudes are imaginary horizontal lines on globe that runs from east to west. Angular distance of a place from the equator, 1 degree of latitude is equals to 111 kilometer approximately. Total latitudes are 181 and distance between each latitude is same. So these are the latitudes, and such 111 latitudes are there. Latitudes are named if they are on upper side of equator. They are 30 degree north, 60 degree north, 90 degree north. The north pole and the south pole are the smallest latitudes. Equator is the largest latitude. आगे देखते हैं. Important latitudes. 0 degree को इक्वेटर कहते हैं. 0 डिग्री इज इक्वेटर. सो 0 डिग्री इज इक्वेटर विच डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. सो 23.5 north is Tropic of Cancer. 66.5 is Arctic Circle. 23.5 south is Tropic of Capricorn, and 66.5 is Antarctic Circle. So Antarctic Circle is in the southern hemisphere, and this is south pole, this is north pole, and Arctic Circle is in
northern hemisphere. Tropic of Cancer is also in northern hemisphere, and Tropic of Capricorn is also northern hemisphere. Earth, India, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास होता है. सो लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सा है, तो वो है इक्वेटर. स्मॉलेस्ट लैटिट्यूड पोल्स पे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दे अपीयर्स लाइक डॉट. डायरेक्ट सनरेज जो होती है वो कभी इस पार्ट पे नहीं गिरती है, आर्टिक सर्कल के नीचे या टेम्परेट जोन के नीचे, और टेम्परेट जोन के ऊपर भी नहीं, या आर्टिक सर्कल के ऊपर. यहाँ पे कभी भी डायरेक्ट सनरेज नहीं गिरती, और यहाँ पे 24 आवर्स डेज एंड नाइट हमें देखने को मिलते हैं. 24 आवर्स का डे, 24 आवर्स की नाइट. नेक्स्ट यूजेस देखते हैं लैटिट्यूड के. लैटिट्यूड के यूजेस क्लाइमेटोलॉजी और प्लेस का लोकेशन देने में यूज होते हैं. क्लाइमेटोलॉजी में टेम्परेट जोन्स, विंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेशर सिस्टम, प्लानिटरी विंड सिस्टम, इन सारी चीज़ों के लिए होता है. नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स. लॉन्गिट्यूड्स क्या है? लॉन्गिट्यूड्स है वर्टिकल लाइंस जो ग्लोब पे ड्रॉ की गई है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाती हुई दिखती है. एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए प्लेन फ्रॉम प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन होता है, वहां से एंगुलर डिस्टेंस पे होती है लॉन्गिट्यूड्स. डिस्टेंस बिटवीन ईच लॉन्गिट्यूड, हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस वैरी करता है फ्रॉम पोल्स टुवर्ड्स इक्वेटर. पोल से इक्वेटर तक हर एक लॉन्गिट्यूड का डिस्टेंस वैरी करता है. लीस्ट डिस्टेंस एट पोल पे लीस्ट डिस्टेंस होता है, और मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे. टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स है? 360 लॉन्गिट्यूड्स. Longitudes are imaginary vertical lines over the globe that runs north to south. Angular distance of a plane from prime meridian. They are at angular distance from the plane of prime meridian. Distance from each longitude varies from poles to equator. And least distance at poles, there is least distance at pole and maximum distance at equator. See, there is least distance at pole and maximum distance at equator. Total longitudes are 360. There are total 360 longitudes. All longitudes divide out into two equal parts. All longitudes are great circles. Important meridians देखते हैं. Important meridians, prime meridian है. Prime meridian is also known as 0 degree longitude. 0 degree longitude जो है वो है प्राइम मेरिडियन, और ये पास होता है ग्रीनविच लंदन से. सो प्राइम मेरिडियन passes through ग्रीनविच लंदन, also known as GMT. GMT ग्रीनविच मीन टाइम. इस लाइन को ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं. इंटरनेशनल डेट लाइन. इंटरनेशनल डेट लाइन इज 180 degree meridian. It is a zigzag line. 180 degree meridian is a zigzag line. See, this line is international. This line is international date line. So this line is this is a zigzag line. If we move from west to east, we lose a date. We lose date, and if we move from west to east, we gain a day. Prime meridian passes to Greenwich London. अभी देखा था हमने 8 कंट्रीज से पास होता है. These are the 8 countries: UK, France, Spain, Algeria, Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana. These are the 8 countries from which prime meridian passes. Then Earth takes 24 hours to complete its rotation or rotation. So 24 hours, and
24 hours means it 360 degree. If 24 hours are 360 degrees, then 1 hour equals to 360 divided by 24. It will be 15 degree. 15 degree distance rotated by Earth in 1 hour. So in 1 hour, if it is rotating 1 hour, 15 degree, then which means 15 degree is equals to 16 minutes. In 16 minutes, it is rotating 50 degree. 1 degree means 60 divided by 50, which means in 4 minutes. 1 degree, it is rotating in 4 minutes. 4 minutes is the time taken in each 1 degree. As we move away from prime meridian towards east, means if it is, this is the prime meridian, and if we move towards east, that will increase the time by an hour for every 15 degrees. So every 15 degree it would be 1 hour increase. And if we move away from prime meridian towards west, it will decrease the time. Same 1 hour 15 degree. For every 15 degree we will lose 1 hour. नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ग्रेट सर्कल. अभी देखते हैं ग्रेट सर्कल का कंसेप्ट. ग्रेट सर्कल इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन स्फीयर. तो ये है ग्रेट सर्कल, ये है ग्रेट सर्कल. ग्रेट सर्कल इक्वल्स टू इक्वेटर and these are small circles. So a great circle is the largest possible circle that can be drawn on a sphere. It divides the earth in two equal parts. So this great circle divides earth in two equal parts: northern hemisphere, southern hemisphere. Northern hemisphere and southern hemisphere. All longitudes are considered as great circles. सारे longitudes मतलब ये ऐसे सॉरी all longitudes are great circle, but only one latitude, that is equator, is a great circle. Thank you.